Every year, 50 million tons of electronic waste is thrown out. 75% of the waste illegally ends up in the landfills of third world countries. Like India, Bangladesh, China, and some African countries, Pakistan has now become a dumping ground too. Computers, fridges, televisions, and unwanted old devices find a new life here, bringing employment to thousands of Pakistani people. But the health and environmental consequences are monstrous. Electronic pollution destroys everything. This represents a huge setback for a country that doesn't have the means to remedy this pollution. Karachi, the economic and financial capital of Pakistan. With its 20 million inhabitants, this is one of the largest cities in the world, an uncontrollable and ultra-violent city. In the city center, a step away from the electronics Grand Bazaar, Ghulam is receiving his goods. Hundreds of computers that arrive straight from the harbor. और कोई आया पार्टी पोटी माल वाली देना दूना लानी नहीं है सही है यार आज माल देना था ना यार तो भाई हफ्ता बाजार लगा हुआ है इस वजह से ना पीर वाले दिन गाड़ी लगा देंगे ठीक है ठीक है Ghulam is one of the main electronic waste importers in Pakistan. He discovered the potential of this market 10 years ago. His Alibaba cavern is packed with broken keyboards, computers, and printers. समझो हमारे ये दो गोदाम है इधर हम स्टॉक करते बाद में उधर से जैसे जैसे हम खोलते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा उधर खड़ते हैं उधर जाके इसको लैदा हर चीज़ को लैदा करते हैं इसको हर चीज़ को बोर्ड को लैदा करेंगे डब्बा लैदा करेंगे पावर सप्लाई लैदा करेंगे हर चीज़ को लैदा करके फिर इसको बेचेंगे अभी शरीफ ये PS2 कीबोर्ड लैदा रखना है हां जी वाइट लैदा रख दियो काला लैदा This 42-year-old tycoon owns 2 other enormous warehouses. He has employed around 30 people and is proud of his success and having come so far. ये तो मैंने कारोबार यूज़ किया पहले मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैंने समझो कोई 10 साल पहले एक कबाड़ का ठेला लगाया था 3 डब्बा जो लोहा स्क्रैप होता ना इसका मेरा काम था वो आस्ता ये समझो पहले नए शुरू बसे ना ये कंप्यूटर हमारे पाकिस्तान में नहीं बिकता था और ये प्लास्टिक कचरा कुंडी पे फेंक देते थे उधर इसकी डिमांड नहीं थी तो हमने आस्ता ये समझो स्क्रैप की फील्ड में आ गए स्क्रैप की फील्ड में से आस्ता इस फील्ड का मेरे को तजर्बा हो गया क्या हो गया वो हमने फिर ये जेर बनाया भी ये डब्बा स्क्रैप में इतने का बन जाता है ये बोर्ड इतने का बन जाता है सप्लाई इतने की बन जाती उस हिसाब से फिर हम मार्केटों से माल स्क्रैप खाना शुरू कर दिया तो हमें रोज़ी मिलती गई हम काम करते रहे ये 10-12 साल हो गए हम ये फील्ड में Charging €500 per ton, Ghulam earns a lot. All of his supplies go through his associates in Dubai, the hub of the region's electronic waste and wholesale. The associates make it seem as if they are functioning second-hand products, hard for customers to tell the difference. इनसे ये कंटेनर मंगाते हैं तो उस पे कोई 1000 मशीन है तो 200-400 मशीन समझो स्क्रैप टाइप की होती है गिनती होता है ड्यूटी भरते हैं उसके बाद कंटेनर को दोबारा फिर सील करते हैं फिर बाहर 1-2 दिन के बाद फिर पोर्ट से बाहर आ जाता माल वो अपने वेयर हाउसों में तारते हैं माल उसके बाद वो छांटी करते हैं माल की जो अच्छा माल होता है वो खुद सेल करते हैं जो हल्का माल होता है फिर वो कबाड़ियों के पास आ जाता है Every year, almost 4 million tons of electronic waste, coming mainly from Europe and the US, is spilled out onto Karachi's harbour. Much that could have been repaired by the manufacturers or distributors in the native countries. I think over the period, the people have realized that getting it recycled in the developed countries, underdeveloped countries, is much cheaper rather than doing it their own countries. And maybe they're having the environmental concerns of the recycling, so
It's just a NIMBY attitude, not at my backyard, somebody else's backyard. This is part of the globalization. The world is becoming a one trade center, so it's, one material which may be a waste for the other can be something for earning for the other country, and e-waste is just like that. According to the UN, Pakistan is earning as much on electronic waste recycling as it is earning on drug trafficking. That is to say, millions of euros. The business has slowly developed a structure and has come to be of particular interest to wholesalers like Nassir, who specializes in DVD readers and CD recycling. हाँ जी, माल तैयार हो गया भाईजान। 900 पीस है तो इसका रेट वेट क्या हो जाएगा? 70 रुपया पीस। 70 रुपया। चलो गाड़ी लेके आ जाओ, पर गाड़ी लाए हो? जी गाड़ी लाए। गाड़ी लगाए। Nassir has just bought 900 devices for 500 euros. He is hoping to earn twice as much by selling them to a scrap metal merchant who will disassemble them. जी बिल्कुल इजाफा हो रहा है। पहले बहुत कम था, अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले बहुत से लोगों को मालूमात नहीं थी इतनी इस काम की, स्क्रैप वगैरह की। अब मालूम है, और दूसरा बात है ये थोड़ा मेहनत वाला और इंटरेस्टिंग वो है काम, इस वजह से हर बंदा हाथ डाल के इसको करता जाए। But not everyone earns as much as Ghulam and Nassir. In Shersha, just a few kilometers away, this waste will be recycled for a lower price. Shersha, one of the most dangerous neighborhoods in Karachi, is located on the border of Lyari. Having been taken over by rival gangs, the authorities have no control over the area. Everything has been recycled here for the past 30 years. Motors, cars, even vessels. The massive arrival of electronic waste has created an informal substance economy that feeds 150,000 people. There are primitive shops at every street corner. However, no health or environmental regulations are in place. Faisal and Akhbar own this recycling shop. Every day, the two brothers receive hundreds of kilos of waste from all over the world. जी हाँ, ये इस कंडीशन में माल आता है, वो पैक होता है, इसको ये तोड़ते हैं भाई, ये तोड़ते हैं, फिर उसके बाद जो इसका जो केबल वगैरह निकलता है वो ये लोग ले लेते हैं। और बाकी ये जो दुकानें हैं ये केबल वगैरह पे काम करते हैं, और इनका तांबे का काम है। स्क्रैप जो है स्क्रैप वाले आके ले जाते हैं। They will extract silver, copper, steel and brass from even the smallest cable and sell it per gram. The working conditions are rough. There are very few tools and no health protection. The men work without masks, glasses or gloves. They work 10 hours a day surrounded by nauseating smells. The brothers are about to get to the motherboards. They use a blowtorch to search for rare elements, precious metals that are indispensable to electronic devices, and for a few grams of gold in the smart cards. इसको जब मैं हिट देता हूँ गन से तो ये निकल जाता है, ये इसमें से झड़ेगा, ये निकलेगा, ठीक है। निकलने के बाद जो है ये रिफाइन होता है। इसमें जैसे कि ये कार्ड है, ये सप्लाई का कार्ड है, सप्लाई का कार्ड होता है, टीवी का कार्ड होता है, और रिमोट का कार्ड होता है, वीसीडी का कार्ड होता है, डीवीडी का कार्ड होता है। इसमें
This waste releases smoke that is full of dioxide or monoxide carbonate. Inhaling this smoke is extremely toxic for the lungs and the brain. हाँ, इसमें केमिकल होता है, ये इसका धुआं जो है, धुआं भी बहुत नुकसान देता है। बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है इसका, क्योंकि इसका धुआं जो है ये टीबी की बीमारी कर देता है। नहीं, इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, और दूसरी बात ये कुछ ऐसे जगहों पे पड़ा। Resignation isn't an option. In Pakistan, every second person lives off €1 per day. सारे अपने काम में लगे रहते हैं, और इनका अपना तकरीबन अपना ही कारोबार है, और यहीं पे जो है सारे काम करते हैं, तो इलाके से बाहर नहीं जाते हैं। इलाके से बाहर जाना नहीं पड़ता, यहाँ पे इनकी रोज़गार है। वसाइल कम है, लेकिन यहीं पे इनका रोज़गार है, यहीं पे ये लोग काम करते हैं। नहीं, ये काम में ख़ास मजदूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि अपना गुजारा करने के लिए मजबूरी है, करना पड़ता है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। चलो आ जाओ फैसल, पानी का बोतल भर लिया। अकबर जल्दी आओ, नाश्ता कर लो, काम पे जाना बेटा। On a good day, the brothers make €2. This is the only income for their family of 6. The father lost his job after an accident. He was working in Shershah, collecting copper. The two brothers are still not able to make as much as their father did. बेटा जब मजदूरी नहीं बचेगा तो बेकार है ना। दो बंदे लगे पड़े, वो मजदूरी नहीं निकले उसमें, ये तो नुकसान होएगा। बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं, मगर हमारे बच्चे के लिए नौकरी नहीं है। अब हमारे बच्चे इतना मजदूरी करते हैं, जो इसी में पूरा पड़ जाए तो अल्लाह के बहुत शुक्र अदा करते हैं। Generally, labor are uneducated. The people who are involved are not aware of what they are handling. So they may not totally aware of what is the danger for their health, what is the danger for the environment, or how it can be damaging. So although the awareness has increased, but not in the communities which are involved in the recycling business. For them, it's a matter of business. So they may be handling those toxic material, they may be handling the dangerous material, but not being aware of what the consequences can be. In Shershah, everyone ends up being poisoned by electronic waste. Lead, cadmium, and mercury is progressively polluting the neighborhood. Even those who don't work get sick. Yet no one seems to worry. Akhbar's mother, Muniba, has always lived here. Ever since she was born, she has been breathing polluted air. She is suffering from stomach upsets, skin diseases, and is often affected by allergies. During certain months, she spends half of her son's income on medicine, but often sees no results. ये दवाई हमारी चलती है सर, ये देखिए हमारी दवाई चलती है, ये मैं खाती हूँ, ये लालू खेत से लेके आती हूँ, लालू खेत। अभी घर में किसी को एलर्जी का कोई मसला नहीं है बेटा, इसको पहले हुआ है, अब नहीं हुआ, अब मेरे को है ये एलर्जी, ये मेरे को हो जाता है। ये मेरे पूरे जिस्म पे, कमर, पीठ, पाँव सारे में होते हैं, चुभती है, जैसे सुई के जैसा चुभती है हमारे को। अब मैं खारिज करती हूँ जी सर, हमारे को ये बीमारी है हमारा। चेक करवाने के लिए डॉक्टर को दोबारा चेक करवाऊंगा। ये कुछ तकरीबन सर ये देखिए, ये अकबर का ये 4 साल पहले इन्फेक्शन इधर ये इन्फेक्शन सर, ये भी इन्फेक्शन, ये दोनों में। अब्बू को भी लेके जाओ। The toxic gases have reached Akhbar's lungs. The 21-year-old young man is living on borrowed time. Today, Akhbar has decided to get a health checkup on the other side of town. Dr. Asif Khan specializes in breathing problems. He has been working in Karachi for 5 years and is constantly busy. सर ये मेरी रिपोर्टें हैं और एक्सरे हैं। आज से 4 साल पहले तकरीबन सन 2011 के दौरान, सन 2011 में ही मुझे जो है सीधे साइड पे इन्फेक्शन था सीने में,
और शायद मैदे में ज़ख़म था, तो ये मैंने रिपोर्टें करवाई थी। जी हाँ, मैंने बाटवा हॉस्पिटल से इलाज करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि सीधे साइड पे सीने में इन्फेक्शन है और मैदे में ज़ख़म है। इसकी वजह से, मैदे की वजह से वो मुंह से ब्लड आ रहा था मेरे। अच्छा, कितना अर्सा उसका इलाज चला था आपका? तकरीबन 1 साल उसका इलाज चला था। उसके लिए आपकी कोई एंडोस्कोपी हुई थी जिसमें कैमरा डाल के जो है कोई टेस्ट किया हो इस तरह? नहीं, कैमरा नहीं डाला था, एक्सरे वगैरह किया था उन लोगों ने। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या करते हैं आप उसमें? उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो नज़र नहीं भी आते हैं। अच्छा, तो पता नहीं चलता है कि इसमें किस किस्म की जरासीम है, लेकिन उसको मैं प्रेशर गन से हीट दे के। मास्क वगैरह पहनते हैं, कोई ग्लव्स पहनते हैं ये काम करने के दौरान? जी नहीं, मास्क नहीं पहनते। ग्लव्स वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। देखें अकबर, ऐसा है कि ये जो आप काम कर रहे हैं जी, जो सर्किट बोर्ड्स जो बनते हैं इसमें मुख्तलिफ जो है मेटल्स से ये बनते हैं, मुख्तलिफ मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। और इन जब आप इसको बर्न करते हैं, प्रेशर देते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको डिसअसेंबल करने के लिए आप बर्न करते हैं, तो इससे क्या है कि मुख्तलिफ जो ऐसे केमिकल्स और गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिहाज से। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि आपको ग्लव्स, मास्क और गॉगल्स जो है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसका जो इलाज है वो एहतियाती है। ठीक है, एहतियात करते रहिए तो जो है वो चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, वरना क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये चीज़ जो है मज़ीद नुकसान का बायस बन सकती है। ठीक है एकदम ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। The e-waste recycling can cause a whole spectrum of health problems, ranging from the skin problems to digestive issues to even neurological illnesses. And obviously, as the magnitude of the industry is growing, so is the magnitude of the health problems. Subjected to cancer, neurological and breathing illnesses. Recycling workers have the lowest life expectancy in the country. 4 million people die every year for causes linked to electronic waste. Despite the risks to his life, Akhbar cannot do without his job. Arriving back home in the evening, he continues his work, piece by piece. The waste and their toxic substances are located in the center of the household. The entire family are exposed to them. अगर दस्ताने हम पहन लेंगे तो ये जो है ना, ये उंगलियां नहीं चलेंगी। और छांटी में सारा काम उंगलियों का होता है, और उंगलियां नहीं चलेंगे तो ये छांटी में बहुत टाइम लग जाएगा। हमें रोज़ तक तकरीबन 25 किलो 20 किलो भी जो है ना, वो 2 से 2.5 घंटे में 4 घंटे में छांटी करना पड़ता है। वो 25 किलो कचरा अगर हम दस्ताने पहन के छांटी करेंगे तो मुझे तकरीबन 3-4 दिन लग जाएंगे उसमें, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इस वजह से हम नहीं पहन सकते हैं। इसमें सिर्फ उंगलियों का काम होता है, ये हम उंगलियां चलाते हैं इसके ऊपर। अगर वो दस्ताने पहन लेंगे तो उंगलियां जो है वो देर से चलेंगी। यहाँ पे पंखे का मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ है। अगर पंखा मैं यहाँ पे लगाऊँ तो लाजमी बात है इसमें से जो इसके अंदर जो मिट्टी और केमिकल है वो उड़ेगा तो वो माहौल में फैल सकता है। But these precautions are derisory. In Shersha, everyone knows that when someone starts to work in recycling, they lose 10 years of their life. मैं इसको बोलती हूँ मगर यहाँ काम नहीं मिलता है ना सर मजबूरी है, मजबूरी की वजह से। अब यहाँ कोई भी जाओ पैसा नहीं है, सारे यही कबाड़ का काम करते हैं। But not only does the electronic waste affect the workers and their families' health, it is also harmful to the environment. Shersha is one of the most polluted neighborhoods in Pakistan. Groundwater is contaminated. On the banks of the Lyari River, amongst the landfill, toxic residues are being burnt. Their poison pours out slowly into the water and the soil. I was grown in the vicinity of Shersha, and my school used to be there right at the bank of Lyari River. And as a student, we used to go to this river to catch fish. It used to be a clean environment. So we have paid a heavy price for just dumping our liquid and solid waste in Lyari River and turning it to just only a gutter lines, or it's just only a waste line. It's a destruction of the environment that I have seen with my own eyes.
So I've grown in the area, so I can realize, and it touches my heart when I go to that area and see the level of pollution. Saba and Shoaib are some of the rare activists that have dared to enter this area. Both of them work for the NGO WWF. देखो कितना ज़्यादा इसमें से स्मेल आ रही है और सारा पोल्यूशन, सारी वो आबादी का पोल्यूशन सारी। और दूसरा, जब ये समंदर में जाके गिरेगा तो इसके अंदर के जितने भी केमिकल्स हैं वो मरीन लाइफ को कितना इफ़ेक्ट करेंगे, ये चीज़ आप देख लें। फिर देखो वो सामने से औरतें, फैमिलीज़, वो बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लिए कितना नुकसानदेह इसकी स्मेल, क्योंकि इसमें सार और इसकी वजह से पूरी एयर जो है ना इसकी वो भी कंटेमिनेटेड है। मच्छर, ये देखो ये सामने कितने ज़्यादा वो मच्छर नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद इसकी डेंगू वगैरह। और फिर ये जो भैंसें हैं इनका जो है ये सारा इसी को खा रही हैं, इसी पानी को पी रही हैं, इसमें रह रही। हमारे समंदर के अंदर गिरेगा क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल करीब की आबादी है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। हाँ, ये जो है, ये जो मतलब जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट एक्सपोजर है, इस पोल्यूशन का डायरेक्ट एक्सपोजर इस यहाँ के लोगों को। ये बच्चों का सारा देखें डायरेक्ट एक्सपोजर है। हम तो यहाँ मतलब हम तो इनको पे आए हैं, आके इनको समझा के चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों को यहाँ रहना है। ये लोग इससे एक्सपोज हो रहे हैं, हर तरह का केमिकल इस रिवर में मौजूद है, हर तरह का पोल्यूटेंट इस रिवर में मौजूद है और ये लोग इससे एक्सपोज हो रहे हैं। ये इनके लिए तो ख़तरनाक है ही है, इनके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ख़तरनाक है। और यहाँ जो है यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हो? खेलने के लिए आए हो? आप लोग यहीं खेलते हो? खेलते भी यही हो? ग्राउंड में खेलो और इधर नहीं आओ। आप लोग छोटे छोटे। Today, Saba and Shoaib are going to warn these children's parents about electro-smog. हम जो है ना आप लोगों से पता करने आए कि ये जो नदी जा रही है इसका आप लोगों की सेहत पे क्या असर हो रहा है। आप लोग ये वाटर बोर्ड पे हम लोग कितने 2 महीने बर्बाद दे रहे हैं पानी के लिए, जाते हैं कुत्ते एकदम हुक्का पे फिर आ जाते हैं। एक विशाल एक बात है, हमारे को कोई पानी तो दे नहीं रहे, इधर से निकल के हम ऊपर जाएंगे, हमारे को सपोर्ट कौन करेगा? करने वाला भी कोई हो ना, इधर रह के तो कोई पानी का गिलास देता नहीं है, ऊपर जाके सपोर्ट कौन करेगा? कोई करेगा सपोर्ट? गवर्नमेंट यहाँ पर आके जो कोई सर्वे वगैरह करके नहीं है, इनके बंदे नहीं आए। गवर्नमेंट यहाँ पहला मौका जो आप लोग का नहीं वो बात ये सुन के आई आप लोगों को पानी तो कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो ज़्यादातर हो रही हैं? सांस, आँखों की और सांस। Malika is an immigrant who fled the north of the country and the Taliban. She was hoping to find work and a peaceful life in Shershah. Now she is worried about her eldest daughter, who has been bedridden for the past few days. The local clinic was not able to tell her more about her condition. परेशानी थोड़ी है, बहुत सारी परेशानी है। जैसे बच्चे जाते हैं बाहर बीमार होते हैं, मेरे बच्चे की आंखों का ज़्यादा मसला है कि वो बहुत आंखों लाल सुर्ख हो जाती हैं, और बच्चों की जिल्द का भी मसला है। अब धुआं आता है तो ये देख बच्ची को खांसी इतनी बुरी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। रात 300 रुपये की दवाई लेके आई, जब भी आराम नहीं आई है इसको। Malika uses part of the family budget on clean drinking water, but it doesn't seem to help. Her daughter is getting worse by the day. कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ तो खा लो। नहीं, कितना दवाई दूँ आपको? क्या खाओगी खाने में? तो रोटी मंगवा के दूँ। Many such families dream of leaving Shershah, but they cannot afford to do so. The authorities are powerless in the face of the e-waste pollution's magnitude. It has become a problem and we are aware, but keeping in view the priority, we focus other ways. If we talk of the just solid waste, municipal solid waste of Karachi, it is currently around
more than 12,000 tons per day. The wastewater, which is whether it is treated or untreated, both are mixed and ultimately disposed through this river to the Arabic Sea. The Arabic Sea is just off the Karachi River and is now contaminated by e-waste pollution. A whole community is in danger, the fishermen's community, representing more than 2 million people in Pakistan. फैक्ट्री की ये क्यों है जो भैंस वैंस है ना इसका गोबर की वजह से बहुत बिल्कुल पहले इधर भी मच्छी बहुत थी अभी गोबर की वजह से मछली नहीं मिलती है तो यहाँ एक नाला है जो आता है फैक्ट्रियों के पास उससे क्या फर्क पड़ रहा है नाला जो गंदगी की वजह से मच्छी तो कम हो गई अभी साफ तो चीज़ नहीं है पूरा जो समंदर पूरा गंदा हो गया अभी समंदर में तो उतरेगा ना फिर भी कीचड़ हो गया बिल्कुल ज़्यादा The material which is coming out of the e-waste from Pakistan and other countries, they are again going back to the developed countries for reuse. So it is not, it's a big cycle. So it is just ultimately these materials, some of the materials which are taken out of the this e-waste of no use for this nation at present, but it is being of great use for the nations which are using it, which means China and even the European countries and America or other places where these material can be used for creating other electronic materials. So it is it's a cycle, it's a big cycle. Dismantled in Pakistan and reused in China or elsewhere, nothing seems to be stopping this vicious cycle of e-waste trafficking. Not even the laws reinforcing the Basel Convention. This is an alarming situation in the face of a growing global consumption of computers and cell phones. If nothing is done, the electronic revolution will continue to have devastating effects. In the meantime, Shersha, an open wound in the heart of Karachi, continues to absorb the aftermath of e-waste recycling.